आप कैसे राम को देखते हैं? पहले तो मैं मंगल कामना करता हूं और हमारे जो अभी इतना सुंदर भजन की धुन में हम लोगों को मदमस्त किया, ऐसे कलाकार बंधुओं को ढेर सारा आशीर्वाद। आपके इस नेटवर्क के माध्यम से देश और दुनिया में जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है वहां तक, एवं आपके सभी दर्शकों को अयोध्या से जय जय श्री सीताराम, बोल बजरंगबली की जय। आपने कहा देश के कोने कोने में, हर वर्ग हर समुदाय में राम का आस्था। मैं कहता हूं दुनिया के कण कण में भगवान राम की व्यापकता। दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो ईसाईयत के मानने वाले हों, धर्म एक सनातन, बाकी अलग अलग तरीके से जीवन जीने की शैली, मजहब के रूप में जिनका जन्म हुआ, आज सुनकर अचंभा होता है कि वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिनकी व्यापकता कण कण में हो, नभ में, थल में, आकाश में, खम्भ में, हम में, तुम में, जड़ में, चेतन में, सब में राम की वास हो, लेकिन पता नहीं कैसे विपक्षियों के मन में रावण का वास हो जाता है। बड़ी तकलीफ होती है भाई, ये सुनकर अचंभा होता है। हमको तो इतनी प्रसन्नता है कि जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। करपात्री जी बैठे बहुत सुंदर बताते हैं, राज्याभिषेक हनुमान जी महाराज का हुआ। कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला पैसा नहीं, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भाव क्या है कि हमारा भाव सेवा का है, समर्पण का है, त्याग का है। आप समझ सकते हो कि 500 वर्ष, एक दो दिन नहीं, 500 वर्ष। अरे एक दिन होता तो एक दिन में तो तुरंत व्यक्ति का पलक भर में विचार बदल जाता। फलाने ने कुछ दे दिया, चलो ठीक है वोट हम उसको दे देते हैं। फलाने ने कुछ दे दिया, 1 किलो चावल दे दिया तो अपना धर्मांतरण लोग कर लेते हैं। फलाने ने जरा सा तलवार दिखा दिया तो तुरंत धर्मांतरण कर लिया। लेकिन मेरे पूर्वज कितने संघर्षशील थे, सहनशील थे। मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर, गांव में, गलियों में, आपने कहा रामा कृष्ण इस संप्रदाय, आप देखिए विश्व के कोने कोने में रातों दिन एक करके भगवान कृष्ण के धुन में लोगों को नचा रहे हैं। भाव ये है, सनातन ये सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन कभी तलवार दिखाकर किसी के ऊपर हुकूमत नहीं किया, राज नहीं किया। हमारा विशाल हृदय, इस विशाल हृदय की देन सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है। ऋषि मुनि महात्मा साधु संत मेरे धर्म गुरु, पूर्वाचार पूर्वज, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, ये जितने जो पूरे विश्व को जोड़ने की पद्धति है, कला है, संस्कृति है, हम लोग तो शुद्ध रूप से एक कलाकार हैं और अपने अपने तरीके से आकर यहाँ पर जिस प्रकार से हो सकता है कार्य कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी निरंतर राम धुन में मदमस्त। इसके नाते आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण आपको कितना अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा तो हनुमान जी को लगेगा, क्योंकि हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। इसलिए हुआ क्योंकि माता सीता ने उनको मानस पुत्र माना था। तो पहले ज्येष्ठ राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था राजघरानों में। इसके नाते हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत कर पुत्रव्रत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। तो जो राम भक्तों ने एक लौ जलाई थी, साधु संतों ने जो त्याग किया था, स्वयं सेवक आरएसएस के जो कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू, इन लोगों ने एक संतों के आशीर्वाद से इनके अंदर जो ऊर्जा आई, उस ऊर्जा का परिणाम स्वरूप है कि आज जब उत्खनन हो रहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस उत्खनन में जब थोड़े दूर पे नहीं, लमसम 22 फीट नीचे, 24 फीट नीचे, 25 फीट नीचे जब उत्खनन में, आपको मैं बता दूं, उसका प्रत्यक्ष मैं साक्षी रहा हूं। इसलिए साक्षी रहा हूं कि हमारे पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज वहां मूर्ति जब वहां प्रकट हुई थी तो वहां सेवा कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पूज्य धर्मदास जी महाराज एक पक्षकार थे। तो मेरे मन में आया कि मैंने पूछा कि हर 15 दिन पर एक मुस्लिम जज और एक हिंदू जज पहुंचता है, वो क्यों पहुंचता है भाई? तो ये हुआ कि वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोर्ट का कोई अवहेलना तो नहीं हो रहा है। ये चीज देखने के लिए दोनों पक्ष के पक्षकार के रूप में चीफ जस्टिस वहां पर पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं।
तो मैंने कहा हमारी भी इच्छा है जाने का। उन्होंने कहा नहीं, पक्षकार ही जा सकता, बाकी कोई नहीं। तो मैं उनके तरफ से पक्षकार के तौर पे मैं जब गया वहां देखा तो उत्खनन का काम शुरू था, चल रहा था। हमने कहा भाई बाहर तो ये चीज कुछ बताया नहीं जाता है। उन्होंने कहा बाहर ये चीज नहीं जा सकती है क्योंकि अभी कल ही फरमान जारी हुआ है कि यहाँ जो भी उत्खनन कार्य है उसको रोका जाए। आप समझिए, उत्खनन कार्य इस कामी, क्रोधी, लालची, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने उत्खनन कार्य को रुकवा दिया। इसलिए रुकवा दिया क्योंकि वहां से जो उत्खनन में आप बताइए कि 12 फीट, 11 फीट, 7 फीट, 4 फीट, 3 फीट को जो स्टोन के पत्थर मिल रहे थे वो एक कलर में नहीं थे। कुछ बलुआ पत्थर था, कुछ संखमरमर था, कुछ काले पत्थर थे। तो मुझको ये लगता है जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि 76 बार लड़ाई हुई, वहां कई बार मंदिर को तोड़ा, कई बार मंदिर का निर्माण हुआ। इससे अनुभूति हम लोग लगा सकते हैं कि कई बार वाकई में मंदिर को विधर्मियों ने तोड़ा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि सनातन का ये विशाल हृदय है और फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिल रहा है। विगत कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। पूज्य करपात्री जी बैठे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राम की पैरी देखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा राम की पैरी खून से लाल हो गई थी। पूछना चाहता हूं मैं, क्या वहां से राम जन्मभूमि की दूरी लमसम 2 किलोमीटर है और जिन लोगों की हत्या हुई, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, गोलियां चलवाई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय में वहां से हम यहां से एक पत्थर बहाएं तो क्या राम जन्मभूमि पहुंच सकता है? क्या यही राजधर्म है? क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या यही पंथ निरपेक्षता है? क्या यही धर्म निरपेक्षता है? क्या कि आप निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया? पर महंत जी, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी। अब यह है कि जब जिसके पास ज्ञान का कोश बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ साथ आपने तथ्य सत्य साथ में देखे हैं तो बहुत कुछ कहा जाता है। मैं धीरे धीरे एक एक करके एक एक परत पर हम बात करेंगे। कारपत्री महाराज जी, आई लाइक टू कम टू यू और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और एक ये प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा है इसीलिए कि राम या भगवान प्रभु श्री राम और रावण दोनों परम शिव भक्त थे। रावण भी बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे क्योंकि शिव जी की रुद्र वीणा बनाना और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, सभी वेदों का ज्ञान उनके पास था। दोनों भक्ति एक ही इष्ट की करते थे, बट एक धर्मी और एक अधर्मी, ये कैसे और ये क्यों? राम भी शिव के भक्त थे, रावण भी शिव के भक्त था, लेकिन दोनों में खान पान का अंतर था। हाँ, अच्छा। कहूं महिष मानुष धेनु खर खल यज निशाचर भक्षहि, भैंसा बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा ये सब खाता था। कहूं महिष मानुष धेनु खर खल अज निशाचर भक्षहि, नाना यखार नभिरहि बहुविध एक एक न तरजहि। ये रावण का भोजन था। और हमारे राम का भोजन क्या था? राम शुद्ध शाकाहारी थे। करई आहार शाक फल कंदा, असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। खान पान का असर था। और दूसरी बात जो आप पूछना चाहते थे, पहले यू डिफाइन व्हाट इज रामा। हाँ, और हु इज राम? हाँ, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल सोचे, होज पर्सन इज राम। जो ऑलरेडी पूरी भारत मां को याद करे, विश्व की में याद करे, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम को राष्ट्र मंगल कहा जाता है। ये जो लोग राम मंदिर पे तमाम प्रकार की बातें बोल रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि राम जो हैं ये राष्ट्र के मंगल के दायक हैं। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और कल कुछ नेता लोग बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, बोल रहे थे कि ये राम जी का जो मंदिर बन रहा है इसको सौड़े में अक्षरों में लिखा जाएगा। आप, ये मेरा भाई छोटा जो आपके बीच में बैठे हैं, मैं, हम लोगों ने इसी कंधे पे लाशों को उठाया है, इसी कंधों पे लाशों को उठाया है। रंगा इतिहास है मेरा
शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। आप इन लोगों से क्यों पूछना चाहते हैं? जो उस युद्ध में नहीं थे, कारसेवा में नहीं थे, वो क्या जानेंगे? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन से पूछिए। ये राम हमारे देश के निर्माता हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं आप आइए, स्वागत है, लेकिन आप रसखान बन के आइए, आप रसखान बन के आइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम बन के आइए, आप बीर अब्दुल हामिद बन के आइए। वेलकम है मेरे दिल में। आप तो बन नहीं पाते हैं, तो खंडन मंडन की बात करते हैं, लेकिन आपका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे रामलला में जितने भी सामान मिले हैं, ये सब खुदाई से ही मिला है। किससे मिला है? किससे मिला है? खुदाई से तो मिला है। ज्ञान वापी में जो कुछ मिला किससे मिला है? ये भी खुदाई से मिला है। और किस जन्मभूमि में जो मिलेगा वो भी खुदाई से मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए महंत राजूदास जी, गौड़ जी और देवशेखर जी थोड़ा पेशेंटली बैठे हैं। आई कम टू यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बट महंत राजूदास जी, आई वांट टू आस्क यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजरंगबली हनुमानगढ़ी की विशेषता क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है? और जैसे चालीसा में भी है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। तो और अभी इन्होंने कहा कि हनुमनुआ तो सबसे बड़ा बेटा उनको माना जाता है। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान की कितनी भूमिका है कि राम आज रोम रोम में है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जब पूज्य अभी कृपात्री जी ने कहा, जब प्रभु साके धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में पड़ जाता है, अगर एक बार हनुमान जी को सुमर ले, हनुमान जी का नाम ले ले, तो उसकी जो कष्ट, दुख, पीड़ा दूर हो जाता है। इसलिए दूर हो जाता क्योंकि हनुमान जी राम रसिया हैं और हनुमान जी राम धुन में मदमस्त रहते हैं। जब भगवान जाने लगे तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी जाऊं, मैं भी चलूं, लेकिन परमात्मा ने उनको रोक दिया कि नहीं, अभी तुमको रहना है। इसलिए रहना है क्योंकि यह व्यवस्था सृष्टि की, समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की आपको देखना है। आपको इसीलिए राज तिलक किया गया है, राजा बनाया गया है। आप देखिए, अगर दुनिया तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए सामने कैमरामैन है, आपने मुझको माइक दे दिया, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का जो काम था, परमात्मा का काम हनुमान जी महाराज करने लग गए। 500 वर्ष आपने कहा कि किस प्रकार से हनुमान जी जन जन में समाये हुए हैं, हर व्यक्ति के मन में। मैं देखता हूं, अभी मैं आ रहा था, सीढ़ी से उतरने में 15 मिनट लगा। हनुमानगढ़ी के सीढ़ी से उतरने में लमसम 15 मिनट लग गया। उस 15 मिनट में कोई बजरंगबली नहीं बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर व्यक्ति बोलते हुए हनुमान जी तक जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे कि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं और नासै रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी सभी कष्टों को दूर करने वाला ऐसे निष्काम भाव के सेवक हैं। हुआ क्या कि जब प्रभु ऐसे अपने भवन में थे तो माँ आई तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान मुस्कुरा दिए तो हनुमान जी वहीं नीचे बैठकर और भगवान का चेहरा देख रहे थे, अपना भजन कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा तो कहना, अरे मैं दिन भर इनका भजन करता हूँ और चिंतन करता हूँ, मुझको देखकर तो नहीं मुस्कुराते हैं। माँ को देखा तो तुरंत मुस्कुरा दिए, बात क्या है? तो प्रभु से तो नहीं पूछ पाए। फिर माँ के
पास आए, माँ से पूछा कि मैया कौन सी ऐसी बात है कि प्रभु आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं, हमारी भी मन होता कि हमको भी देखकर प्रभु को खिलखिला के हंसे। कहना बस इतनी छोटी सी बात, भाई हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति और पति और पत्नी का संपर्क संबंध क्या जान सके। तो माँ समझाए कैसे अपने बेटे को, तो माँ ने समझाया कि देखो बेटा, ये देख रहे हो, बस एक चुटकी जो है सिंदूर देख रहे हो, इसको जो मैं लगा लेती हूँ, इसको देखकर प्रभु मुस्कुरा दिए, और कोई बात लेकिन बस इतनी छोटी सी बात। अभी मैं बताता हूँ। तुरंत गए माँ के कक्ष में, सिंदूर कहाँ से पावे, माँ के कक्ष में गए, उनकी जितनी साजो सामान रखी हुई थी, सिंदूर रखा था, पूरे देह में लेप कर और चले आए। पहले माँ के पास आए, माँ बहुत खिलखिला के हंसी, माँ इशारा किया जाओ प्रभु के पास। जैसे प्रभु के पास हनुमान जी आए, भगवान खिलखिला के हंस पड़े। तो वो निष्काम भाव के सेवक महाबली हनुमान, जिनके पास कोई लालसा नहीं, कोई लालसा नहीं, लालसा सिर्फ इतनी थी उनको कि भगवान देखकर मुस्कुरा दे, बाकी कोई लालसा नहीं थी। इसके नाते जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, हनुमान जी क्योंकि अजर और अमर हैं, माता सीता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसु, तो अजरता का अमृत कर पुत्रवत आशीर्वाद दिया। तो आज कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, और हर जगह कहीं पर भी पहाड़ पर रख दो, नदी में उनको रख दो, समुद्र में उनको कहीं किनारे पे लगा दो। आप देखो एक समय था हमारे ही हनुमानगढ़ी से गंगा सागर, कपिल मुनि भगवान का मंदिर है, इसी सरजू के सहारे हम लोग नाई से कई सौ वर्ष पहले की घटना बता जाया करते थे जी। और वहां पर हनुमान जी महाराज को, भागीरथ जी को, गंगा मैया को, महाराजा सगर को और कपिल मुनि भगवान प्रकट होते थे। और 14 को मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी आएगा, उस पर भव्य खूब देश के कोने कोने से कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि वो बीच समुद्र के बीच में था, हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता था, बहुत कठिन काम था। तो वहां पर हनुमान जी महाराज समुद्र में समा जाते थे। एक दिन ऐसा मंदिर महाराजा सगर का समुद्र में समा जाता था, तो एक दिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि वहां पर हनुमान जी को बैठा दिया जाए। हनुमान जी को बैठा दिया गया। 24 किलोमीटर का टापू है, आप समझो, वो 24 किलोमीटर का टापू हो गया। तो हनुमान जी का जहां वास हो जाए, सारे कष्ट, सारे पीड़ा, सारे रोग, सारे दोष, सब भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी के नाते हर व्यक्ति, हनुमान जी सरल है, सुगम है, सुनते हैं, इसके नाते हर व्यक्ति के मन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा है, हर व्यक्ति हनुमान जी को भजते हैं। बहुत सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं ये भी है, कहा जाता है कि जहां जहां राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, हनुमान कहीं आसपास ही होते हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं हनुमान जी की आस्था, उनकी श्रद्धा आवश्यक है। हिज ग्रेस, बिफोर आई कम टू यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट दोज यंगस्टर्स, something that is part of the God Sampradaya, what Prabhu Shri Krishna Chaitanya has said is Nama Sankirtana. So they have composed something for Ram. With your kind permission, I'd request them to perform that, and then I'll come to you, His Grace, with your kind permission. राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। राम 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 राजा राम, राम राम श्री राम, राम 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 सीता राम, राम राम बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। I want to ask you, from the Krishna Chaitanya Parampara or the Gaud Sampradaya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the 16 syllable chant, जिसको कहा जाता है कि भक्ति मूवमेंट में, that's what it said, that the current generation may not remember the scriptures, but you do Nama Sankirtana, chant this. Hare Krishna is because of Sri Krishna Chaitanya and seen as an incarnation of Krishna. But why Rama? Hare Krishna.
बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि राम क्यों? कि श्री कृष्ण का तो चैतन्य महाप्रभु के कारण नाम आता है, तो राम क्यों है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बताया गया है शास्त्रों में, जो श्री राम जी हैं वो मुक्ति के दाता हैं। हाँ, किसके दाता हैं? मुक्ति के दाता हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्रेम के दाता हैं। जैसे हाँ। मुक्ति मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे हमको सब कुछ कोई परेशानी न होके, कोई दुख दर्द न होके, लेकिन दुख दर्द न होना, लेकिन हमसे कोई बात करने वाला न होके, हमसे कोई प्रेम से बात करने वाला, प्रेम से बुलाने वाला न होके, तो उस खाने पीने या हर चीज की फ्रीडम का कोई फायदा नहीं। जैसे कोरोना पीरियड में था, सब लोग लॉकडाउन हो गए थे, और लॉकडाउन होने के कारण से लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो लोग क्या होता, मुक्त थे, मतलब कोई काम नहीं करना है सब, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो प्रेम को इस संसार में मुक्ति के लिए सभी लोग भागते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रेम के दाता है। भगवान राम आपकी मुक्ति के दाता है। आपको इस संसार से भगवत धाम ले जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति के साथ साथ प्रेम भी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति के साथ साथ प्रेम ही दिया है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये कोई सामान्य महामंत्र नहीं है, और ये जो मंत्र है कली संतरण उपनिषद में लिखा गया है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोष्कम नामनम कली कलमस नाशनम, नातः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्द का नाम है, ये नाम है। हरे मतलब राधा रानी, मतलब भगवान कृष्ण को, भगवान को उनकी शक्ति के बिना कभी अलग शक्ति से अलग नहीं कर सकते। जैसे राधा कृष्ण आता है, सीताराम आता है, उसी तरह से हरा मतलब राधा रानी, या राम में हरा मतलब सीता माता। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उससे भगवान की शक्ति और भगवान दोनों का आह्वान करते। तो ये जो 16 शब्द का नाम है कली कलमस नाशनम। जैसे आज के युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, दे हैव वेरी गुड टैलेंट, लेकिन उनको उस टैलेंट को कोई यूज करने वाला, पहचानने वाला संसार में नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है उनके अंदर। ऐसे जैसे देखिए आज इतना टेक्नोलॉजी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कहीं ये भी कहा जाता है दैट कि राम और कृष्ण को जोड़ने वाले भी हनुमान है। जी जी। क्योंकि अर्जुन के ध्वज पर जो थे वो हनुमान थे, और वो हनुमान ही थे जिन्होंने ध्वज को, रथ को नीचे दबा दिया ताकि अर्जुन का मत कटा नहीं। वो अयोध्या में, सॉरी महाभारत में उसकी व्याख्या है। तो राम और वो कृष्ण के ध्वज पर इसी थे, क्योंकि कृष्ण सारथी थे, इसीलिए अर्जुन के ध्वज पर वो थे। यस, भगवत गीता में बहुत अच्छा से इसका वर्णन आता है कि जहां भी भगवान राम रहते हैं वहां पर हनुमान जी न रहे, ये असंभव है, असंभव है। इसीलिए यहाँ पर जैसे राम जी जब रावण से युद्ध लड़े थे तो वहां पर कौन आए थे? युद्ध को जिताने वाले हनुमान जी थे। हाँ। उसी तरह से यहाँ पर स्वयं भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान जो कृष्ण है वो युद्ध कैसे जीत सकते हैं जब तक उनका परम भक्त हनुमान जी नहीं है। इसलिए जहां जहां राम आएंगे वहां वहां हनुमान आएंगे। पर यह भी कहा जाता है कि राम ने जो जो किया कृष्ण ने वो नहीं किया, पर दोनों ने धर्म के लिए किया। ये कैसे दोनों धर्म के लिए कर? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। लेकिन राम जी हैं, राम जी एक मनुष्य के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक आइडियल लीडर के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक सामान्य समाज है उसके बीच में कैसे कार्य करना चाहिए, धर्म को कैसे बांधते हुए, धर्म की सीमाओं में रहते हुए कैसे काम किया जाए। तो मनुष्य को राम जी सिखाते हैं कि कैसे आपको मनुष्य के लेवल पर आना है। लेकिन जब वही राजा जब धूर्त हो जाए, उन राजाओं को, धूर्त राजाओं को कैसे मारना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि जैसे कभी कहा जो घी होता है ठंडी में नहीं निकलता है, तो क्या करना पड़ता है? अंगुली टेढ़ा करना पड़ता है। तो कलयुग के आने से पहले द्वापर युग था, और द्वापर युग में कई ऐसे असुर आए जो बहुत टेढ़े हो गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललितम रूप है भगवान का। इसलिए टेढ़े होकर के उनको क्या किए, ऐसे ऐसे कार्य करके उनको एक जगह इकट्ठा करके भगवान क्या करते हैं, उनको छल से कैसे भी करके धर्म की स्थापना करते हैं। पर धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। तो यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था देवशेखर जी? आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि धर्म को हम फेथ से ना जोड़ के देखें, रिलीजन से ना जोड़ के देखें, धर्म को जीने का तरीका या जो
संसार को धारण करके रखे, धारयते इति धर्म, उस हिसाब से अगर देखें तो क्या दोनों ने धर्म की रक्षा की? क्या दोनों धर्मी थे? Yeah, thank you. So I would like to first of all I would like to thank you for giving this opportunity. And in English it said that if you give a wrong introduction, it's as good as not giving introduction. So let me introduce myself. So I'm Devshikhar Vishnudas. So I'm project director for ISKCON Ayodhya. On top of that, I just wanted to let you know that I'm part of the same lineage of Lord Ramchandra ji. Oh, okay. So I've also come from a Survanshi Kshatriya clan. And till recently, our forefathers for 500 years they have not wear the turban and shoes. So we are coming from that lineage. So I'm not here just for ISKCON, but also it feel pleasure for us that Lord Ram, who is our forefather or ancestor, or we can say whatever, so he is coming back to his lost glory. So coming back to your question, why is it significant? It's significant because let me ask you this, why was the glory lost? Because Ram was everywhere, so why was he not there Virajman on his Janmabhoomi? Yes. If Ram was there in everyone's hearts, why did it happen? And what does this return of Ram Lala to come back and sit where he was always supposed to be Virajman, what does it actually mean for us as people, as Bharat? Yes, so you have asked a very relevant question, and we have to understand the fact that even though Ram itself means who is present everywhere, Lord himself expands the Garbhodakshay Vishnu, and he goes and sits in every atom. So even though Lord is everywhere, but we have to understand the fact that we are not impersonalist, we are personalist. Okay, so we can all of us we are householders, we have kids, so all the kids are roaming outside, but why do you have to do progeny? Right, we need progeny so that we can call somebody our own. So he's our son. So similarly, even though Lord is 5,000 what happened 500 years back is what it doesn't it's we can say it was not we should not either it's not actually the person who follows his religion, no religion teaches us we should demolish any others holy place. Correct. But whatever happened was not good. But again, coming back to this, the fact that, Lord Ramchandra is coming back again here is significant because it signifies, it signifies that Lord Ramchandra himself, who have lost somewhere, is coming back and manifesting himself again. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyuthana madharmasya tadatmayam srijamyam. So srijamyam means he manifests himself. So if you correlate with that, he is manifesting himself here again. So it's not we can say it's not very that it's not unrealistic that Lord cannot manifest in this form. Lord can manifest, and we can say Lord have taken avatar once again here. Yeah, because Krishna also says paritranaya cha sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So if I were to ask you that, तो आज कौन से धर्म की स्थापना होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग कॉन्शियसनेस इन भारत? क्या एक परिवर्तन उस लिहाज से आ रहा है जहां भारत अपने आप को फिर पालेगा? एग्जैक्टली एक सिविलाइजेशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम एक सभ्यता है, वो सभ्यता उस सभ्यता का ज्ञान क्या अब हमें हो रहा है? जी बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न है कि धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या है, तो प्रायः धर्म की संस्थापना का अर्थ हम मारकाट समझते हैं। तो मारकाट एक पार्ट है। तो जब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जब प्रकट हुए, एक्चुअली जन्म कहना कई बार जन्म कह देते हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सो अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्राकट्य को समझ ले, प्राकट्य का अर्थ भगवान जो है कभी सामान्य बालक की तरह माँ के गर्भ में रह करके रक्त मांस मज्जा के मध्य में नहीं आते, वो जब भी आते हैं वो प्रकट होते चतुर्भुज रूप में। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका मूलभूत उद्देश्य होता है दुष्टों का संहार करना, लेकिन उसके पहले बोलते परित्राणाय साधु नाम। तो साधु हैं जो भक्त होते हैं उनको आनंद देने के लिए। तो जैसे अगर भगवान की लीलाएं ना होती, जैसे राजूदास जी ने कहा, कारपात्री महाराज ने लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया, तो अगर लीलाएं ना हो तो भक्त आस्वादन क्या करेंगे? तो भगवान का मूलभूत उद्देश्य भक्तों को आनंद देना है। राक्षसों को मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली गेट आउट ऑफ दिस बॉडी, पर्सन इज डेड। तो उनको मारना नहीं है, लेकिन लीलाएं नहीं करेंगे तो उसका आस्वादन भक्त कैसे करेंगे? और भगवद गीता में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम
Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti Otam cha protam. protam. We have to get, engrossed into that. That is what bhakti is all about. So similarly, when it comes to dharma, so dharma does not mean कि सिर्फ it's a part of religion. Dharma, religion जो है एक इंग्लिश शब्द है. And अगर आप डिक्शनरी में देखें तो religion can be classified as kind of faith. लेकिन धर्म जो है वो faith नहीं है. धर्म is something which will not change. And जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, whatever equipments we bring, उसके साथ वी गेट अ मैनुअल, उसके साथ एक हमें निर्देश पत्रिका मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि जीवन को कैसे चलाना है. या ये टीवी है तो उसमें बताया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू रन इट, ऑपरेट करने के लिए. तो अगर उस मैनुअल का पालन करेंगे हम तो चीजें सुचारू रूप से चलेंगी. तो धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या होता है कि भगवान हमें वो नियमावली, वो निर्देशिका बताते हैं जिससे मनुष्य जीवन को हम किस तरह से निर्वहन कर पाए. हिंदी भाषा में दो शब्द होता है, अनुकरण और अनुसरण. तो भगवान की लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं. और जब हम अनुसरण करेंगे तो भगवान जो धर्म के निर्देश को बताए हैं उस निर्देश पर जब हम चलेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा सुचारू रूप से चलेगा. तो जैसे हम सारे लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं तरह तरह से, लेकिन भगवद गीता जो है एक मनुष्य का मैनुअल है, या रामायण जो है एक मनुष्य का मैनुअल है. तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रक्षति. सो हाउ वन विल गेट पीस व्हेन समबडी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, 3 फैक्ट्स. व्हाट? कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर. तो जो भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को समर्पित करना, भगवान रामचंद्र जी को. ठीक है. यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोपाइटर ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आप वर्तमान समय पे देखिए इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि युद्ध जो चल रहे हैं वो उसका कोई वो यूजलेस युद्ध है, क्योंकि ये जो धरती है ये हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी और आगे भी रहेगी. तो हम नहीं रहेंगे. तो इसका प्रोपाइटर कौन है? भगवान ही है. और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो थर्ड पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, दैट लॉर्ड इज द वेल विशर ऑफ एवरीवन. तो हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के लिए है ना, लेकिन अगर हम देखें भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म महदियोनि अहम बीज प्रजापिता. आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द एवरी स्पीशीज ऑफ लाइफ. अहम बीज प्रजापिता. आई एम द सीड गिविंग फादर. नाउ व्हेन यू से आई एम द सीड गिविंग फादर, दैट मीन्स व्हाट? लॉर्ड इज कंपैशनेट टू एवरीवन. And when he came in form of Lord Ram, he showed that compassion. The great example is Jatayu. Correct. See how Jatayu. तो हम कहते हैं भगवान सिर्फ मनुष्यों की योनि में आते नहीं, सारी योनि में आते, सबको प्रेम करते हैं. तो आप देखिए कि वो राम जिन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने एक पक्षी का दाह संस्कार किया, उसे अपने जंघे पर बिठा करके उसका दाह संस्कार किया. तो आप हम भगवान को, रामचंद्र जी को किसी जाति पंथ इससे नहीं बांध सकते. और जब धर्म की बात करते तो धर्म वो चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती. Want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. 50 be advised, Capitol Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Well, thank you very much. We love Trump! We love Trump! We love Trump! We love Trump! I need you all to commit right here, right now, to be a part of this movement. Take back Arizona. Support the Patriot.
Working as an engineer throughout my life, I lived by the motto that numbers don't lie. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. It's no wonder Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They're willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win. They will do anything to win. They'll do whatever they have, whatever they can. And remember this, Joe Biden is a threat to democracy. He's a threat. Courtroom 209 is now in session. Honorable Judge Sarah B. Wallace presiding. बात घुमा के मैं वापस राम पर ही लेकर आऊंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर आप राम की दिनचर्या कारपत्री महाराज जी एंड आई थिंक फाइनल राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां से लेकर के राजू दास जी तक कि प्रभु श्री राम ने हमेशा दर्द ही झेला, यानी पीड़ा उनके जीवन में पूरा अगर आप देखें सिर्फ पीड़ा ही थी, फिर भी वो अपनी लाइन को नहीं छोड़े, यानी धर्म को नहीं छोड़े। ऐसा क्यों? और क्या ये आज के समाज में पॉसिबल है, करना पॉसिबल है? और राम राज्य की कल्पना उस युग में की जा सकती थी जब शायद राम थे, जब राम थे। आज क्या हम कर सकते हैं उसकी कल्पना? आपने तो बस इतनी हाँ ऑन है सर, ऑन है। हेलो, आपने तो इतनी अच्छी बात पूछ लिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गहराई तक जाएंगे। जब भगवान श्री राम जी का प्राकट हुआ, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। मां कौशल्या कह रही हैं कि आप रो नहीं, हो गया, मैं समझ गया कि आप बच्चे हैं, रोना चाहिए। लेकिन राम ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। तो हमने प्रभु से कहा कि अब थोड़ा सा रो ली, अब क्यों रोने का आवश्यकता है? तो प्रभु राम ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आया था तब तक संसार के लोग रो रहे थे, अब मैं आ गया हूं, अब संसार में किसी नहीं रो रहा है, रोना मात्र मुझे। क्या बात, वाह। जब तक मैं नहीं आया था तब तक तो लोग रो रहे थे, अब मां मैं आ गया हूं, क्या इसके बाद भी प्रजा रोएगी? अब तो रोने का काम मुझे करना है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक सुरभूपा। ये परमात्मा का चरित्र है। और परमात्मा ने सिखा भी, आप बोल रहे थे ना, धर्म की बात कर रहे थे, परमात्मा के पास पहुंचने का एक तरीका धर्म है। परमात्मा के पास पहुंचने का एक तरीका धर्म है और उसको पहुंचाने के लिए संत काम करता है। यानी संशय इत्यंत है, यश संत है। जब आप मेरे पास बैठे हैं और कोई शंका आपका हो और पूछिए नहीं, अगर उसका अंत हो जाए तो समझिए कि आपके पास कोई संत बैठा है। संशय इत्यंत यश संत है। अदरवाइज यू नो से SAINT सेंट, अदरवाइज यू नो SAINT सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज सेंट। सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज सेंट। यानी आपके शंकाओं का समाधान करके परमात्मा के चरणों में जो अनुराग पैदा कर दे वो समझो संत है। तो मेरे प्रभु राम, अभी आपने हमारे राजू जी से बड़े अच्छा प्रश्न पूछा, मैं जीता जाता उदाहरण हूं। 84 में जब राम जन्मभूमि का ताला खुला
प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पाद नित्य गोपाल दास, जगत गुरु हरियाचार्य, कृपा शंकराचार्य, तमाम जैसे संत जब छोटी छावनी से मजीरा बजाते हुए चले राम जन्मभूमि जाने के लिए, मैं गवाह हूं 84 का। और हनुमानगढ़ी पे हम लोग पहुंचे तो हनुमानगढ़ी से कम 500 बंदर हनुमानगढ़ी के ऊपर से कूदे और हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया। हम लोग बिना मजीरा के जन्मभूमि के पास पहुंचते हैं, उससे पहले ये 500 बंदर राम जन्मभूमि में मजीरा बजा रहे थे। अरे बाप, ये मेरा दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत, अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे कुकर बम छोड़ा गया आतंकवादियों के द्वारा। 3 कुकर में बम छोड़ा गया जी। रिफ्यूज स्क्वाड के पुलिस ऑफिसर आए, मात्र 6 सेकंड बाकी था, मात्र 6 सेकंड बाकी था, कुकर बम जो है विस्फोट होने वाला था। और ऊपर वाले पहुंचे कलश के पास तो देख रहे थे एक बंदर दोनों तारों को दांत से डिस्पोज कर दिया। ये अयोध्या के हनुमानगढ़ी को हनुमान जी ने बचा लिया। तीसरा उदाहरण जिसका मैं जागरण हूं, अयोध्या में 5 आतंकवादी आए। सदगुरुदेव डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा, करपात्री क्या कर रहे हो? मैंने कहा पूजा करना। रहे छोड़ पूजा। 5 आतंकवादी पहुंच गए हैं रामलला के ऊपर। वेद मंदिर के पास मैं पहुंच गया हूं और तुम मेरे पास मत पहुंचो, तुम दौड़ो सीधे जाओ हनुमानगढ़ी पे और हनुमान से कहो अगर एक भी बम फूट गया तो निश्चित तौर से हनुमानगढ़ी पे कोई लड्डू नहीं चढ़ाएगा। ये मान लूंगा कि अयोध्या में हनुमान जी नहीं है। मैं दौड़े दौड़े नंगे पांव पहुंचा, हनुमानगढ़ी के चौखटे पे सर रख दिया, रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा हनुमान जी, आज ये 5 आतंकवादी आए हैं, यदि एक भी बम फूट गया तो मैं यहां बैठ कंसल्ट करूंगा। इस हनुमान जी को एक भी लड्डू मत खिलाना। अयोध्या में केवल मूर्ति है, ये हनुमान जी नहीं है। सच बताओ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी स्फूर्ति हुई, जागृति हुई, एक ऐसी भावना आई, अरे दौड़ो दौड़ो, तुम जाके दौड़ो, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जाके देखो, जब तक मैं हनुमानगढ़ी बैठा हूं एक बम नहीं फूटने पाएगा। 5 आतंकवादियों को मैं मारूंगा। वहां से दौड़े दौड़े वेद मंदिर के पास आया और मेरे सामने 5 आतंकवादी अपने ही बम से चिथड़े उड़ गए। कौन कहता कि अयोध्या में हनुमान जी नहीं बर्बाद? मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, खुले मन से बोल रहा हूं, जिसको मैंने देखा है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वहां धर्म की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्म पर त्याजम, सर्वधर्मान पर त्यज्यम, मामेकम शरणम व्रज। प्रभु कहते हैं कि मेरे पास पहुंचने के बाद, मेरे पास पहुंचने के बाद आपको धर्म की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे भगवान लॉर्ड कृष्णा क्या है? अच्छे हैं, भागवत पढ़िए। 16,108 नारियों के पति हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब पता है आपको, आर्टी एंड वेंस इंक्लूड प्राइमरी, आर्टी एंड वेंस इंक्लूड प्राइमरी इन द ह्यूमन बॉडी। आदमी के शरीर में 16,108 नाड़ियां पाई जाती हैं। आर्टी एंड वेंस इंक्लूड प्राइमरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। 16,108 सिरा और धमनी नाड़ी जो है आदमी के शरीर में पाया जाता है। और उस सिरा 16,108 नाड़ियों को कंट्रोल करने वाले हट में बैठे हुए लॉर्ड कृष्णा है। लॉर्ड कृष्णा है हृदय में बैठ करके 16,108 नारियों को जो चलाने वाले कौन है? भगवान लॉर्ड कृष्णा है। तो लेकिन एक चीज है, निवेदन करना चाहता हूं, क्षमा करेंगे। अब जो है शायद कृष्ण की आवश्यकता है। कारण है एक वृंदावन का बाबा आया यहाँ पे, लोगों ने कृष्ण कहीं जप रहा था आपकी तरह। यहाँ कहना भाई क्या बात करती है, रामा रामा जपो। रामा रामा जपते जपते कुछ दिन गया, फिर पहुंचा वृंदावन, वहां रामा रामा भगवान कृष्ण मिल गए। चुप, यहाँ कृष्णा कृष्णा जपो। कहे क्यों कृष्णा जपूं? ने आपको खड़ा होने का तरीका है, पेड़ खड़ा होते हैं, नाम भी खड़ा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो बाबा, एक हमको स्नान कराओ। कुएं पे बैठ गए, एक बाल्टी स्नान करने लगा और बाल्टी टूट गया, बाल्टी कुएं में गिर पड़ा।
तो कैसे निकाला जाए। पहले के जमाने में बाल्टी निकालने के लिए एक कांटे की आवश्यकता थी, रस्सी में बांध करके डाला जाता था तो गगरा या बाल्टी निकला था। तो एक रस्सी लिया, कांटा मंगाया और नीचे से गगरा निकाल दिया। किसने कहा समझे? कहे नहीं, कहे भगवान सीधे साधे हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे। कलयुग में तो हमारे से कांटे की आवश्यकता होती है, इसे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस नाते मैं निवेदन करता हूँ, आज 500 साल तक जो हमने झेला है ये मेरी कमजोरी है। मैं संतों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों से कहना चाहता हूँ, खुले मन से कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर में बैठ करके जो है यज्ञ कराइए और खूब राम नाम का जाप कीजिए, खूब स्तुति कीजिए, ओम शांति वहां कीजिए। लेकिन जब बाहर निकलिए, जब मेरे कृष्ण के ऊपर, मेरे राम के ऊपर, मेरे वंदे मातरम के ऊपर, मेरे भारत माँ के ऊपर कोई उंगली उठावे तो ओम शांति वही छोड़ करके नौजवान इकट्ठा होकर बोलिए अब ओम शांति नहीं, अब देश के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। ओम क्रांति की आवाज होगी, तब कोई मंदिर नहीं टूटेगा, तब कोई मंदिर नहीं फूटेगा। एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, ऐसा हिंदुस्तान का रखवाला होना चाहिए। हमारे देवी देवता भी ऐसे ही हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। तो ये भाव तो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक आप वहां पर शांति नहीं ला सकते। ये तो थियोरी और आर्ट ऑफ वॉर भी है। महंत राजूदास जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न है, समय अल्प है और हमारे वहां चकमा के जो युवा हैं वो भी बहुत अब तो रुकर सुन रहे हैं, लेकिन 1 घंटे से उनको हमने खड़ा भी रखा है, तो एंड भी उन्हीं से, आरंभ उनसे किया था, अंत भी उनसे करेंगे। पर जाते पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये 22 जनवरी का दिन और इस मंदिर के साथ क्या आप भारत के भविष्य को भी जोड़कर देखते हैं? अब मुझको लगता है 22 जनवरी सांस्कृत आजादी के वो दिन है, वो पल है, वो क्षण है, वो अवसर है, भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। इतनी कल्पना किया था कि आज उनके कल्पना मात्र से ही एक स्फूर्ति जगी, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज विक्रमादित्य के रूप में मोदी जी आ गए और स्वामी विवेकानंद के रूप में योगी जी आ गए। आप समझ सकते हो, जो यह कहता हो सनातन मतलब डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यह कहता हो हिंदू मतलब चोर, नीच, पापी, भारत में ही संभव है, सनातन में ही संभव है। किसी को दम हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी को दम हो तो अन्य धर्म के बारे में बोल के दिखा देना। नहीं बोल सकता है, बोलने लायक नहीं रहेगा। मैं अभी सनातन को गाली दूंगा तो सबको माला पहना देगा, अरे वाह बाबा क्या बात है, बहुत बाबा बहुत सेकुलर है। जैसे अगर अन्य धर्म के बारे में बोलूं, गेट से बाहर निकलूंगा, दूसरे दिन बम धमाका मैं उड़ जाऊंगा। सांस्कृतिक आजादी के दिन ऐसे फ्री में नहीं मिला, उसको याद करना पड़ेगा। ओम क्रांति के साथ ओम शांति तो बहुत हो गया। इसके नाते यह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर, वो दिन भारत का दशा और दिशा 22 जनवरी के बाद चेंज हो जाएगा। जिनकी मानसिकता देखिए, लोग यात्रा शुरू कर दिया। आप देखो, जब उस दिन जिस दिन भूमि पूजन था, उस दिन लोगों ने तिरपाल टेंट पहनकर वो धरना पे बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप अपेक्षा आप हमसे करते हो कि कॉपीराइट भगवान राम पे बाबाओं का नहीं है, भगवान राम सबके हैं, सही भगवान राम सबके हैं, सिर्फ साधु थोड़े नहीं। जितना अनुराग, जितना प्यार, जितना प्रेम हम भगवान राम से करते हैं, कहीं ज्यादा आप करते हो, क्योंकि आप सदगृहस्थ हो। भगवान कितनी कृपा, हम तो साधु हैं, दिन रात भजन करते ही हैं, उनका काम है खिलाना, क्योंकि हम साधु, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम उन्हीं के सहारे हैं, तो उनका काम ही है। लेकिन आप इस प्रलोक में जिस प्रकार से इतने सारे झंझावात में व्यस्त हो, उसके बाद परमात्मा की याद करते हो, तो विशेष स्नेह तो आपको पर परमात्मा का। फिर भी देखिए, जिस प्रकार से इन षड्यंत्रकारियों ने, ये कुधर्मियों ने सनातन को बांटने का प्रयास किया, काला कपड़ा पहनकर धरना पे बैठ गए। एक तरफ तो कहते हो कि नहीं भगवान राम हमारे, अरे आपके हैं, रहेंगे, ये नहीं कहते आपके नहीं है, लेकिन आप उस चीज को कम से कम, जब हम विपरीत परिस्थिति में थे, जब हम आपसे कहते थे, निवेदन करते थे, पूज्य करपात्री जी हैं, हम लोग रोज 60 में खत्म कर रहा हूं, रोज हम लोग चिल्लाते थे, आपके तमाम कैमरा में रहते थे कि नहीं डे टू डे सुनवाई होगा। अरे मंदिर खाने देगा क्या, यहाँ हॉस्पिटल बना दो, सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, अरे राम राम, मैं बात बोल नहीं सकता, शौचालय बना दो। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। आज वो कहता है कि मुझको निमंत्रण नहीं दिया गया, ट्रस्ट ने दे दिया तो वो कह रहे कि हम नहीं आएंगे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे कालनेमियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा, ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की आपको जरूरत है, हमको नहीं। हम तो
अब ओम क्रांति करने लगे, शांति कर आपको करना है। आपको ऐसे कालने में सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो कुर्ते ऊपर से जनेऊ दिखाने लगेंगे। ये कहने लग जाते हैं मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। एक अब बताओ, रामचरितमानस फाड़ना जलाना उत्तर प्रदेश में, जहां पर लाखों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, ऐसे प्रदेश में रामचरितमानस प्रतिबंध और फाड़ने की बात करना, ऐसे प्रदेश में किसी कार्यालय में गीता को फाड़ना, गीता को जलाने की बात करना। अरे राम राम सीताराम, राधे कृष्णा राधे राम। पर ऐसा कहते हैं ना कि जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक प्रकाश की कीमत, प्रकाश की व्याख्या नहीं होगी। तो वैसा ही है कि जब तक ऐसे तत्व नहीं होंगे तब तक कोई रामचरितमानस उठाएगा नहीं, उसके बारे में जानेगा नहीं और उसको पढ़ेगा नहीं। तो दोनों की आवश्यकता है। आप बस सबको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि सबको सद्बुद्धि मिले। पर वन थिंग बिफोर वी एंड, हाँ जी प्रभु, अभी आपने एक प्रश्न किया, हाँ, ये 22 जनवरी को लिया गया है, हाँ, तो इसका उत्तर मानस से ले लीजिए। ये 22 क्यों रखा गया है? हाँ। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण 4 वेद, क्या हो गया? 22। इस नाते तिथि 22, क्योंकि 18 पुराण 4 वेद के स्वरूप में राम जी हैं। और जनवरी इस नाते हैं कि परमात्मा रहे हैं, वो करें कि शांत रहो, कोई बरी नहीं होने पाएगा, हम सबके घर आएंगे। इस नाते ये क्या है? जनवरी। लेकिन यहाँ पे आए हैं, प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि 2, 4, 6 दिन यहाँ रुकें और गेस्ट हाउस में मत रुकें, टेंट में मत रुकें, कनक भवन के यहाँ जाएं और कनक भवन सरकार के यहाँ पड़े रहें। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। ये बच्चे गा नहीं पा रहे हैं, यहाँ के लौकिक गीत है। जी बिल्कुल, मैंने उनसे कहा था चलिए लेट्स एंड दिस। बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन हुआ। नाम संकीर्तन भी एक रह गया है, बाकी रह गया है, पर आज समय अल्प है, तो इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। Co-presented by
We now have two standards of justice. As far as the joke of an indictment, it's a horrible thing. It's a horrible thing for this country. I mean, the only good thing about it is it's driven my poll numbers way up. Can you believe this? Way up. Be advised, Cal Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. Good evening, hello and welcome. You're watching Brass Tacks. I'm Anusha Soni. The city of Ayodhya is all decked up. And this is ahead of the Pran Pratishtha ceremony on this 22nd of January. The invitations have gone to all political parties for the big day. Many opposition parties continue to politically stammer on whether they will attend the grand ceremony or not. Shiv Sena UBT-led Uddhav Thackeray, that particular political party, has slammed the BJP for making temple inauguration a solely event which is aimed for political purposes and political gains. The Congress is yet to decide on its presence at the grand temple inauguration ceremony in Ayodhya, saying that they will decide at the right moment. Ram Temple shall be a pillar of the political discourse ahead of 2024 general elections. No political party can shunt it as a non-issue. Has this issue really been politicized, or is this about the sketchy past of some opposition parties that leave them scrambling for answers? Our focus on brass tacks tonight. We will certainly look forward to a post-election future when we can all go to temples without politics. जो है बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाकर और पूजा अर्चना रामलला की मूर्ति स्थापन करने का काम स्वर्गीय राजीव जी के समय हुआ था। मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। आज इस बात को लेकर देशवासियों में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है भगवान राम हमारे हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाती है देश के अंदर? 30%, 35%, 40%? Our constitution makes it very clear. Politics and religion should not be mixed. Pretending that they are Hindu devotees, they campaign during elections. But when it comes to the issue of participation in the Pran Pratishtha of the temple, they have doubt. Somewhere along the line, Congress party has lost its ideological moorings. Now, the opposition is framing its attack in the context of 2024 Lok Sabha elections. We have Congress MP Shashi Tharoor, who has tweeted, and this is part of our Motorola, India's best 5G smartphone tweet of the day. Hello, Moto.
So Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Ram Mandir in Ayodhya on the 23rd of January and the BAPS Hindu temple in Abu Dhabi on February 14. I expect elections to be called very soon thereafter. The message is clear. In 2009, Mr. Modi was sold to the Indian electorate as then avatar of economic development and the CEO of Gujarat Inc., who would bring in development. This is a series of tweets that Mr. Shashi Tharoor has put out. And he also goes on to say that in 2019, it was the demonetization, the Pulwama terrorist attack that gave Mr. Modi the opportunity to convert the general election into a national security election. And all of this begs the question, what happened to Achhe Din? So once again, Mr. Shashi Tharoor taking pot shots at Prime Minister Narendra Modi, questioning the BJP about the alleged politicization of the event. And he's not alone. In fact, parties like Uddhav Sena have also questioned the BJP as to why are they stealing the sole credit for construction of Ram Temple. BJP, of course, has denied all these allegations. On Brass Tacks tonight, joining us first on the debate is Mr. Arvind Sawant, who is a Member of Parliament from the Uddhav Sena. Sir, good evening. Thank you so much for joining us on the broadcast. My first question to you is about the invitations which have or have not been extended to your political party so far. Many leaders, including Mr. Sanjay Raut, are on record to say that the struggle that your political party did for the construction of Ram Temple is something which has been lost in the narrative. See, one who is making comment, whether he is authoritarian on this issue, can he make authentic statement on him? Is he empowered to do that? Simple thing, as far as Ram Mandir is concerned, everyone knows in the country that Vandaniya Hindu Hriday Samrat Shiv Sena Prabhu Balasaheb Thackeray not only demanded, he raised the issue in a loud voice, so that the entire country, including the government, should hear it. And later on, with this issue, Lal Krishna Advani ji has taken a Rath Yatra. You can't forget that also. Yes. But in 2014, after our government has come, when we were there as a part of an alliance, the Honorable Uddhavji Thackeray went on insisting that you must make a law to construct the temple. But instead, he was saying it in the rallies also. Mandir wahi banayenge, Tariq nahi batayenge. We were in alliance and he was warning them. Why we are forgetting that? We assured the country that the Ram Mandir will be constructed. But somehow, okay, it's a part of history now. The Honorable Supreme Court has delivered the justice, not the BJP. Don't forget that. And the dhacha which was existing over there as a Babri, which was collapsed. Who has done it? When it collapsed, nobody took responsibility. On the contrary, you people went to Sundar Singh Bhandari. He himself said, no, it's not our job. We have not done this. Not our party has done this. They came to Balasaheb Thackeray and he said, if it has been done, it must have been done by the Shiva Sainiks of Balasaheb Thackeray Shiv Sena. And then they approached Balasaheb Thackeray and what Balasaheb Thackeray said that time, the Honorable Thackeray Sahab has said, if the demolition was done by Shiva Sainik, I am proud of it. And that is what has happened. Don't forget that. You, while beginning the work of Ram Temple also, you created a puja. There also you did not invite even Uddhavji Thackeray. Can you forget? How can you forget that? Ask him why he was not invited that time. When the piling stone was raised, they did not invite him. And we don't bother about that also. As far as we are concerned, we believe in Ram. And that is the reason I said the other day, what I said, प्रभु रामचंद्र के लिए हमारे दिल में प्यार है, इनके लिए व्यापार है. प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए नीति है, इनके लिए राजनीति है. प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए पुरुषोत्तम है, इनके लिए प्रचारोत्तम है. So this is what I said, and that conveys the message what I want to say about it. We don't bother about it whether they invite or not. Just okay. If they invite, whether to go to not, we had been there twice, thrice, and we will go again as and when we feel it is suitable to go over there. We'll take a watch. We'll go there and take the blessings of the Prabhu Ram. Don't worry about that. Sir, it's not an issue. Sir, is there a sense or you feel that you've not been accorded the dignity that your party deserves for the fight that you had put up for the Ram Temple, or you feel that the credit completely has been taken by the BJP, something that Mr. Sanjay Raut has also spoken about?
I don't know how 22 days are there. 22 days. Why so much of hurry? Whether to attend, we are going to attend it or not, whether we have invited or not. We haven't received any invitation till this time. Why to make comments on this? And we don't believe. It's not the, celebration is a different part of. You must believe in the thoughts which he has inculcated in us, Prabhu Ramchandra ji. When you call Ram Rajya, whether Ram Rajya is going on in the country or Ravan Rajya is going on in the country. Think of it that time. That is more important than the invitations and other things. Sir, I will reiterate the question. The credit some political pundits believe that ahead of 2024, when it comes to the construction of the temple in Ayodhya, that political credit will be completely taken by the BJP. Do you feel that your party has been denied that due credit? They always hijack the other things. They set the narratives, they hijack them. Can you imagine? Prabhu Ramchandra ji is holding the finger of the Vishwa Guruji, Honorable Prime Minister, and walking along with him. Is it the honor? Or is it the regard they show towards the Prabhu Ramchandra ji? Do you want to say that? Political thing, we don't think of it. It's not, the issue is over in fact. We assured it, we have done it, and the temple will be completed now. The issue is over. But they know they are miserably failed in the issues of the country. The modesty of a woman is assaulted every day. How can you forget Manipur? It's a miserable failure of law and order in the country. The farmers are doing suicide. The unemployed youth is running on the road. Jobless, crores of people are jobless. The inflation is touching the sky. Okay. These are the issues where the government has miserably failed. And that's the very reason they want to go up for these issues. How to divert, how to set a new narrative, how to make the people, illusions are being created. And out of the illusions, they lure the people. Look, this is what we have done. Then you talk about the gas cylinder. What is the price of the gas cylinder? Has it gone down? Don't forget those days when the hardly 400 rupees the cylinder was available. Leaders were dancing on the road. Today they have forgotten it. The inflation has gone to the sky. Don't forget that. And that's really miserable. So in Maharashtra, forget about not only these are the issues, but there are other issues, social issues. And social issues are casteism. Okay. The people are fighting for the reservations. Marathas versus OBC, OBC versus Dhangar versus Adivasis. What is going on? Sabka Saath, Sabka Vikas. Is it going on? Are you taking Sabka Saath? Are you giving justice to the people? You have miserably failed in it. And that is you want to set a narrative. On 22nd, you are going to inaugurate it. Today, on 29 December, for a whole month you want to play the game. Is it not? They are using you. You are helpless people. You can't say no to them. Sir, let me also ask you something about your alliance partner, the Congress Party. The Congress Party has had a dubious position on Ram Mandir, the BJP argues. The BJP argues that the Congress Party has had inconsistent stand when it comes to Hinduism, Sanatan or various other issues. They have not been able to decide so far whether to attend the ceremony or not. And in fact, certain leaders are on record to say that the manner in which Ram Temple is being given importance is rather disturbing. How do you see the position of your own alliance partner, sir? Do you believe in hatred or do you believe in love and affection? Do you believe in hatred? This is what the question I can tell you. Don't forget, the Ram Lalla was a small one. Ram Lalla was confined to a small temple. There was a lock to it. Who broke the lock? You tell me, who broke the lock and opened the temple? Rajiv Gandhi. Then who's Rajiv Gandhi? He was the Prime Minister of the country. Who's Rajiv Gandhi? He belongs to Congress. So these selective questions and selective excuses cannot lead to a solution. It cannot lead to a solution. You have to see this. That is the reason I am saying it. Do we believe in hatred or do we believe in love? What do you mean by Ram Rajya? Did he behave like this? Even with Ravana, he did not behave like this. Don't forget that. Sir, my last question to you, since we have you here on the show tonight, there's a lot of chatter about Shiv Sena, Uddhav Thackeray backed Shiv Sena,
and the Congress party not being able to come to any kind of conclusion or agreement when it comes to seat sharing ahead of 2024, it is being reported that your party is not ready to cede any kind of extra space to the Congress party. Is there a difference of opinion, sir? It's too early or premature to speak about this. Again, everyone has at the liberty to say, seat sharing will be done by whom? The Honorable Sonia ji, Rahul ji, Kharge ji, Honorable Sharad Pawar ji, Honorable Uddhav ji Thackeray. They are most matured and experienced leaders of the country. They know what to do and where to sacrifice, where to join. So this is, see, if someone makes a statement, it's okay, different. What is there? Again, I am saying this is the beauty of the debate. Let us speak. All right, sir. Thank you so much, Mr. Sawant, for joining us on the broadcast and sparing your time. Thank you so much for joining us on Brass Tacks tonight. Well, let's get to our big debate. In the Ram Mandir showdown, will this opposition politicking or the fact that they have not had a consistent stand, will this political backfire for them in the run-up to 2024? That's the key question we ask on Brass Tacks tonight. Hello, Moto. Well, joining us on the broadcast is Mr. Sharat Tiwari, he is the spokesperson of BJP, Mr. Sanjay Jha, who is a political analyst, Mr. Ghanshyam Tiwari, the spokesperson for Samajwadi Party, and Mr. Sriraj Nair, who is the spokesperson of VHP. Good evening, gentlemen. Thank you so much for joining us on Brass Tacks tonight. Sharatji, coming to you first. Uddhav Thackeray and his party feels that you've stolen the credit for Ram Mandir. I was hearing Mr. Sawant for last couple of minutes, and I was absolutely shocked that a party which was in the forefront of ideological purity in the country, Balasaheb Thackeray forsook power for so many years just because he was ideologically pure. He wanted Hinduism. He wanted Ram Mandir. And a party which on the eve of the inauguration of Ram Mandir, on the consecration ceremony of the Ram Mandir, this party is mollycoddling the whole issue. नहीं जी, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई. We have gone through this through thick and thin. Everybody knows that we have the kind of economy we are dealing with today. We are the fifth largest economy in the world, and everything falls in place. Here there is a party which is coming out with every conceivable idea. हम जाएंगे नहीं जाएंगे. अरे, you should have been the first one to jump the bandwagon and attended the ceremony. How is BJP sort of making it political? We don't deny that Balasaheb Thackeray said that his Shiv Sainiks were involved. If they were involved in the demolition of the Babri Masjid, we are very happy with it. We are very happy with Congress claiming that we broke the locks of the temple. No problem. It's a national celebration. Every Muslim wants to celebrate, every Hindu wants to celebrate. The trouble is that the vote bank between Osama bin Laden ji and Atiq Ahmed ji, that is the whole crux of the issue. They come to attend the function, they are going to lose one vote bank. If they don't come to attend, so they think that they might lose the vote bank of another group. This is and all the parties are involved in it. It's the same story. Communist Party it's a pretty old story that it's a Chinese supported, Chinese funded, Chinese allegiance to China. They have nothing to do with India. This is the party which celebrated Tiananmen Square massacre. This is the party which said, which degraded its own leader just because he said that we should donate the blood in 1962. So there is no problem with them. But what happens with Shiv Sena? What is the problem with Congress? Congress, we do believe that it's a national party. They should have joined it. No, we are still thinking we are going to decide, we have to consult it. Who are you going to consult? And BJP has nothing to do with this celebration. It is the Ram. Sharatji, last time, one of the arguments that Mr. Sawant made was also the fact that last time when the foundation stone was laid, even that time Uddhav Thackeray ji or his party was not invited, and that was an occasion where an invitation should have been extended to them. I would have been one with him if BJP was the one who was laying the foundation ceremony. It was nothing to do with BJP. Honorable Prime Minister was invited as the Prime Minister of the country, not as Mr. Modi. He was invited as Prime Minister of the country, and today the UP Chief Minister is going to be invited as the UP Chief Minister, not as Mr. Yogi. So if these people are invited as national symbols,
or state symbols, it is okay with them. So it is the Ram Janambhoomi Kshetra. Mr. Sanjay Jha, Sanjay Jha, please come into the discussion. Well, to a certain extent, it's true that it's the Ram Janmabhoomi Tirth Sthal and that particular trust which is managing the entire affairs as far as the construction of temple and invitation is concerned. But Sharadji, to completely deny that BJP has no role in terms of the organization of ceremony, in terms of the invites which are being extended, I think is rather an extension of an argument and it taking it too far. Sanjay ji, when it comes to the Congress party, they have still not made up their mind. Whether it's Mr. Sam Pitroda or it's Mr. Shashi Tharoor, they have gone on in public and questioned the manner in which this entire event, quote unquote, is being politicized. Does it suit the grand old party that whose leaders go on a temple run, visit various temples, claim themselves to be, devout Hindus who are practicing the religion, to boycott a ceremony of this nature? After all, you are the leading principal opposition party in the country. I'm talking about the Congress party. Mr. Sanjay Jha. Sir, I think you'll have to unmute yourself. Good evening to you and my fellow panelists. My short answer to your question is, number one, the temple of Bhagwan Ram is being built and we need to thank the Supreme Court of India for taking a unanimous verdict on a matter that was going through a pretty prolonged dispute. So my first problem is, why is the BJP trying to hijack a Supreme Court verdict? I think that's, in my opinion, a very low form of political morality. Number one. Because unless the BJP thought or they already knew that the Supreme Court verdict will go in their favor, in which case I would love to hear what the Supreme Court has to say to that. Point number two, I think Mr. Trivedi or the gentleman who spoke before me is absolutely right. The BJP has got nothing to do. It's a Ram Temple Trust that is issuing the invitations. Fair enough. So why is the BJP actually going hammer and tongs at everybody in the opposition and asking them, are you coming or not coming? The truth, I'll tell you, Anusha, is this, that all India alliance partners who have been invited, I can tell you with some degree of confidence, they will be there. And I'll tell you why they should be there. Because you don't want the Bharatiya Janata Party to actually play its same old crude, political playbook, where they believe that Bhagwan Ram only belongs to them. तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि देखिए, भगवान राम हम सबके हैं, वीएचपी के हैं, आपके हैं, घनश्याम जी के हैं, अनुषा जी के हैं, हमारे हैं, और जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, भगवान राम सबके हैं, हर धर्म के लोगों का भगवान राम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से, अनैतिक तरीके से आप लोग भगवान राम को ही अपने तरफ खींचना चाहते हैं। The question, why is the BJP trying to appropriate Hinduism and Bhagwan Ram? Because the truth is that end of day, for the majority community in this country, I'm a Hindu, I'm a practicing Hindu, I'm a Brahmin, I'm very proud that the Ram temple is being built. I wish, however, that the Babri Masjid demolition had not happened. But I need to make a point that end of day, for the BJP to try and make a crude manifestation of his political games. Mr. on Sanjay Bhagwan Jha, Ram, I agree with the broad sentiment of the argument that you're making, that Lord Ram, his legacy belongs to every Indian. I completely agree with that. I think that's not the debating point here. The point here is that before the Supreme Court judgment and before the temple construction really started, there is a history, a political history in this country where various opposition parties, including the Congress party and its leaders, were on record to dispute the legacy of Ram. It was argued inside the Supreme Court and outside the Supreme Court that whether Lord Ram exists or not, do we really have the ASI evidence on record? BJP and Shiv Sena, backed by Balasaheb Thackeray, were the only two political parties who took a politically consistent stand when it came to the construction of Ram Temple. So I also think that it's not so much a question of appropriating the legacy, but also about putting the modern, relevant and contemporary history in the right context. And also, if you may answer that, if Ram belongs to everyone and each political party, as you rightly argue, should be a part of it, why isn't the same level of keenness shown by all political parties, including the Congress? Okay, Anusha, you have raised some very pertinent points. Quick answers to you. Yeah. Number one, the Congress party and many of his leaders have said
that it was Rajiv Gandhi who allowed these Shilanyas to happen. In fact, if you look at the Rajiv Gandhi's and the Congress's campaign, they said we will bring in Ram Rajya into this country. So to say that one party said or was against it is a ridiculous proposition. Point number 2, does the BJP, I want to ask this question to Sharadji actually. Sharadji, are you actually proud of the fact that the Ram temple may be being built today, but do you know what happened after the Babri Masjid demolition? Are you aware of how many human lives were lost? Innocent Indians, whether they were Hindus or Muslims, were murdered in communal riots. Sharadji, I live in Mumbai. This city has never been the same again. Are you trying to tell me that you endorse the communal violence that was the repercussion of the Babri Masjid destruction? A quick point from Mr. Sharad Trivedi, then I'll bring in Mr. Ghanshyam Tiwari and Sriraj Nair into the discussion. Sharadji. Well, I don't know whether this was right or wrong, but I do not know whether before this demolition of the Babri Masjid, where there were no communal riots in India. It only started because of the Babri Masjid. There were no communal riots before that. There were no Hindu-Muslim riots, no Sikh riots, no Shia-Sunni riots. It only started because of the demolition of Babri Masjid. If Babri Masjid had not been demolished, we would have had no terrorism in the country. From 1979 to 1993, we had terrorism in Punjab, and post that we have had terrorism in Kashmir. It would not have happened only because of Babri Masjid. Okay, I take that point. I have to go to other guests as well. I'll come back on this. Sanjay ji, I'll come back on this. But Sriraj Nair ji, when it comes to the opposition parties and the kind of positions that have been taken, all oppositions party argue that no political party or an organization can claim the sole credit for the Ram temple in this country. In fact, Ram belongs to everyone. That is the narrative which is adopted by all political parties, including the Samajwadi Party. But the history, as I argue, stands against them in many ways. Sriraj ji, agar aapko meri awaaz aa rahi hai. Well, there is a saying in English that, yeah, I can hear. There is a simple saying in English, success has many fathers, failures has none. Now, since the temple is getting ready, we are going to see a grand temple at the Janmabhoomi. Now, the likes of Sanjay Jha, I don't know whether he's still with Congress or because last I heard was he has been suspended with the party. Now, the temple is coming up. Everybody wants their share of credit, definitely, except Swargiya Bala Sahib Thackeray, whom we see as real Hindu Hriday Samrat. There is no doubt about it, but not after his demise. Not the party which is going on right now. Now, definitely, now Mr. Sanjay Jha and his party, then party, if you remember when Raj Krishna Advani ji undertook the Rath Yatra, and it was when the Rath Yatra was stopped by Lalu Yadav ji, they all rejoiced. This is the same Congress party. Now he is saying about Rajiv Gandhi opening the law, Rajiv Gandhi ji opening the locks of the premises. This is the same party which ensured and roped in the best of the best lawyers so that they can argue and ensure that the Ram temple does not come in existence. This is the same party which claimed and which said Ram is kalpanik, Ram is an imaginary figure. Now this Mr. Sanjay Jha has the cheek and the audacity to share his part of credit, to take his part of credit. It really surprises me. The BJP and Shiv Sena, then Shiv Sena, were the only two parties who fought for ensuring that there comes, and they had, even BJP was the only party which had Ram temple in its manifesto. So definitely the credit will go. People of this country are not fools. They understand who wanted Ram Mandir to come into existence, and the people who ensured and who roped in the best and the best of the best available lawyers to argue in the courts so that Ram temple never comes in existence. They always appeased Muslims. Today also, even after they are given invitations, they are just beating out. I'll come to you, Sanjay ji. I want Ghanshyam Tiwari ji also to join the discussion. Ghanshyam ji, I think the same history, the same appeasement politics, that's a charge against the Samajwadi Party as well. And Ghanshyam ji, one more question that I want to add, that I asked the Congress as well, that
I want to know from the opposition camp that if Ram and his Astha belongs to everyone in this country, then why aren't the political parties keen to attend the inauguration or the Pran Pratishtha ceremony? On one hand, you argue that this temple has got nothing to do with the BJP. It has got to do something with the Supreme Court verdict. So when it comes to that particular and a crucial ceremony on the 22nd of January, why isn't SP, Congress and all the political parties keen to be a part of that particular ceremony? Good evening, Anusha, to you, the viewers, and my fellow co-panelists. Has, to the best of my knowledge, and maybe there are erudite people like Sharad, Sriraj ji, Sanjay ji, and you yourself, has any party issued a whip for any of its members to go and attend the ceremony or not attend the ceremony? Has BJP issued a whip to all its members? Sharad ji, are you attending? Have you received the whip from BJP? No, I get the drift of what you're trying to argue, sir. I don't think there can be any party whip in terms of you know whether is there a compulsion. You were in power when Kar Seva took place, and you brutally murdered innocent Kar Sevaks. Mr. Ghanshyam Tiwari, please take your time. Please make your argument. I'll come to that. As far as riots are concerned, Sharad eloquently said that just because 1992 riots happened and the past riots happened, in some way 1992 riots can be justified. By that logic, any future riot will be justified. That this riot is happening, where were you in the past? The whataboutery of riot politics, whether it is 1992, whether it is the Gujarat riots, whether it is the Nuh riots, whether it is any or other riot now riots. or Muzaffarnagar riot, any other riot, in future, the Delhi riots, the BJP whataboutery will continue. They are the people who develop their politics on riots. Their tall leaders emerge. Look at the kind of hate speeches that even Yogi Adityanath has given in the past. He did not get those cases against him which are medals of his social welfare scheme. So that's the other part. Okay. As far as the temple is concerned, as I have maintained, and every political party will maintain, that Astha एक व्यक्तिगत विषय है. I cannot ask Sharad ji how many times he goes to temple. He probably does not know how many times his own parents go to temple in a day, and you would either not know. So it is a matter of personal faith. People will visit the temple with their family with full celebration. But the question is temple and whether I visit the temple or not, is that the national agenda? I believe not. I believe that whether Sanjay Jha visits the temple or not, that's not national agenda. But whether the 50% of educated youth in India who remain unemployed, is that a national agenda? Whether Manipur remains burning, is that a national agenda? That 140 members of parliament were thrown out, important laws are passed, is that a national agenda? So our view is very clear. No matter how much BJP plays the hype, and they say that ये तो trust कह रहा है, कौन सा trust घनश्याम जी, लेकिन अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हो रही है और वहां पर अगर समाजवादी पार्टी ही नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पहले सत्ता में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ तो दर्शाता है. मैं ये नहीं कह रही हूं कि महंगाई, बेरोजगारी इस देश के अहम मुद्दे नहीं है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज ऑफ दिस कंट्री, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एंड इट्स इवेंचुअल कंप्लीशन इज अ watershed moment. This is something that has created political fault lines in this country for the last 3 to 4 decades. Can you really deny that, sir? There are 2 points. One, समाजवादी पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, बीजेपी भी कोई व्यक्ति नहीं है. As I start with, has any party issued a whip that every member should be there? हर कोई जाएगा, जो जाना चाहता है वो जाएगा, और मोदी जी के कहने पे नहीं जाएगा और बीजेपी के रोकने से नहीं रुकेगा. पहली बात. As far as the Mandir movement is concerned, it is the project that BJP undertook. They have the legitimacy to go to people and say that this is our central theme to ask for your votes, and to that extent they have been saying that for as long as their manifesto has existed, the Mandir project has been part of that. Okay. And they are legitimate to go and tell that to people, and at the same time it is our legitimacy to tell people that in Ramayana of 2024 that BJP is cooking or building or creating or presenting, Braj Bhushan is the ambassador of Ram, that women have to feel insecure when they come to power. Youth will find joblessness because they want your children. Shiraj Nair ji, this is something that Ghanshyam Tiwari ji has spoken on 9 PM even earlier, and this is a narrative I hear coming in from the opposition parties, that somewhere in this entire quote unquote spectacle that has been created,
ahead of the Pran Pratishtha ceremony, BJP is trying to push back some important key political issues that dominate the political discourse. Sharadji, why don't you come in on that point first, and then I'll go to Sriraj Nair. Anusha, we've been very clear from the time of Jansang, 21st October 1951, that Ram Mandir is part of our agenda. And we achieved it. We said that UCC is a part of our agenda, we did it. 370 a part of our agenda, we did it. We don't make bones about the fact. We don't go to the Italian Mata ki Jai and then say ki nahi ji, Shiv Sainik jo gaye the, wo pata nahi kahan chale gaye the, and we don't know, and now we have to discuss about the gas ka cylinder. The problem with this, all the parties, is that the whole crux of the issue is the secular votes. Because they're feeling that if one of these people go there, then the secular votes will be heard. After all, when those people, obviously everybody is not being invited, but those who are invited, why are they saying ki nahi, we'll think about it, we'll have a meeting. But Sharadji, their argument is that there is no party whip that has been issued. Koi whip thodi hai, koi zabardasti thodi hai ki hame jana hi hai. No, you don't have to issue a party whip for a personal invitation. It's an invitation for Rahul ji, it is an invitation for Sonia ji, it is an invitation for Mamta Didi. All the leaders are invited. It is not it's a sort of a lottery that, okay, everybody is going to come and they are specifically told that please come and attend the ceremony. And that too by an independent trust. Okay, I want to give the closing arguments to Mr. Sanjay Jha and Mr. Sriraj Nair. Mr. Sanjay Jha. Yeah, Anusha, let me tell you, the other day Prime Minister Modi made a statement कि मेरे पास सिर्फ 4 castes हैं. He talked of poverty, youth, women, and the farmers. And I think and farmers. Yes. Look at the truth. On poverty, you have today over 16% of Indians living below the poverty line. And this is a UNDP report. And by the way, this is a conservative estimate. This government has failed on poverty. Farmers, we saw how they were protesting on the streets in the cold, and we saw how the government treated them. Over 700 lost their lives. We talk of youth. You have today youth with a record unemployment, and we saw what happened the other day in Parliament. I mean, people are getting desperate. The demographic dividend story of India is over. As far as women are concerned, we saw how this government treated Sakshi Malik, and we saw how they tried to hide an ugly episode in Manipur. So this is a government of hypocrisy, and they are using religion in every possible way to try. Mr. Sanjay Jha, can I also take you back in time during the UPA era? What were the poverty levels then? Do you remember? Do you remember how that poverty line was defined by the Planning Commission? I will give you the answer. Yes. You know what the report is? Modi government Between is clearing the backlog. I'll come to you, Shiraji. I'll give you the closing comments. Between 2004 to 14, India lifted 270 million people out of poverty, the second highest after China, and one which is quoted the world over. Okay, I have last 2 minutes on the show. Shiraji, you belong to an organization that has worked for this cause, still actively working for the successful and the full completion of the Ram Mandir. But how do you see this debate when it comes to the Ram Temple? There always been a bigamy of sorts that has been created, where development is pitched against the religion. The moment you talk about a temple, I remember those arguments. Why don't we build a hospital there? Why don't we build something else there? Why do you need a temple in this country? Why don't we need schools and colleges in this country? Is development the antithesis of religion in this country? See, first of all, I'll tell you, if you see the Ram Mandir site, there are 3,500 people working, and you'll find, I'm telling you with full responsibility, so you will find nobody migrating out of UP. Now, Mr. Sanjay Jha was talking, there is a big backlog that needs to be covered. Now, after Ayodhya temple, there will be so many 5-star hotels. Food and beverage industry will grow. Tourism will grow. So many people are going to get employment. There is a huge employment generation only because of this temple. And Mr. Sanjay Jha is a brand, is a person with a brand management background. I don't know. This is not expected out of Mr. Sanjay Jha. At least I know there are a lot of duffers in the Congress party, but Mr. Sanjay Jha is an intelligent person. Okay. So once a temple is built, it is going to change the face of Uttar Pradesh. Lots and lots of people. I am from Kerala. I have heard from my grandparents. People from Kerala down south used to walk to Banaras and Kachi.
So now it's going to be a huge, the economy is going to grow. These people just want to create some kind of nuisance. I am telling you, with full responsibility, it is only appeasement politics. Even a donkey, if it falls in the pit, it changes the way. Even after losing elections after elections, they are not learning a lesson. I don't understand why are still they appeasing only one community and they want to mock, ridicule Hindus every time. They are the people who coined saffron terror. I believe that narrative is over. I don't think politically or culturally in this country you can mock any religion, including the majority religion, and not have ramifications for it. And I'm not saying that any one political party has done it. But thank you, gentlemen. That's all the time that I have on the broadcast. Looking forward to that big ceremony on the 22nd of January. Shifting focus on the road to 2024, there are rumblings in the INDIA alliance over the creation of a concrete strategy to take on the Modi juggernaut. Karnataka Chief Minister Mr. Siddaramaiah has called for projection of Mr. Rahul Gandhi as the alliance prime ministerial face. Both the TMC and the Aam Aadmi Party have batted for Congress Chief Mallikarjun Kharge, while JDU still pushes the names of Nitish Kumar, who has taken reins of the party's national presidency. But the reality of seat sharing is causing another rift in the opposition. In Maharashtra, Uddhav faction of Shiv Sena wants 23 seats, similar to 2019 Lok Sabha polls, which the Congress has rejected. But Mr. Sanjay Raut has gone on to say that Congress is not a force in the state and must start from the scratch, pointing that the Congress party will not be able to win any kind of seats. Meanwhile, TMC has said that only it can defeat the BJP in West Bengal and the Congress party can't do anything, adding that giving seats to the Congress will only help the Saffron party. As state-level contradictions affect the national agenda, can Congress find a middle ground to pitch itself as the fulcrum of India alliance? Is there a middle path that can be carved out? Our focus on brass tacks. शिवसेना ने जिस तरीके से मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? Rahul Gandhi should forget about Nyaya Yatra. He should start Indi Jodo Yatra, because the way in which the alliance partners are fighting, अब पूरे alliance में no mission, no vision. देश में इंडिया लड़ेगा और बंगाल में जो एंटी बीजेपी लड़ाई होगा उन पे लीडरशिप देंगे तृणमूल कांग्रेस। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। यहाँ पर लेफ्ट क्या है? तृणमूल के साथ एक टेबल में बैठने का औकात भी लेफ्ट लोगों को नहीं है। Well, these problems and internal divisions were always well known, but it was obvious that they would emerge to the front, they would dominate once you come down to the brass tacks of it, which is the seat sharing agreement. Let's take these questions to our guest as well, Mr. Vishwas Pathak, who's the spokesperson of BJP, Mr. Charan Singh Sapra, who's the national spokesperson of the Congress party, and Mr. Sajid Kesapariwala, who's the leader of Shiv Sena from the Uddhav Thackeray camp, is also joining us on the broadcast. Mr. Sapra, I want you to open the debate for us. When it comes to the Congress party, we can't deny the fact that it is still the largest opposition party in the country. It is the only party with a pan-India presence. But look at the problems that you encounter right now in the state of West Bengal and Maharashtra. These are case examples, case studies that I'm picking up. Do you believe that a TMC or a Shiv Sena, Uddhav Sena, will cede to you the kind of space that you actually want and perhaps deserve? See, I feel whenever there is a larger alliance, there are some smaller issues which every party needs to, take care of. Let me tell you that Congress party has taken a democratic process. We have been studying constituency-wise situation in each state. Today, entire day, we had a meeting in
Delhi in AICC, and the 5 members of the committee which is looking after these alliance. They have studied each and every seat. Probably in another couple of days or maybe a week, we'll come out with certain things. Then we'll sit with our alliance partners. Now, apart from this is not the issue only with Congress party or with India alliance. This is also an issue with BJP. For example, let me tell you that in Maharashtra, BJP had won 23 seats in 2019. Now they want to retain those 23 seats. In the current political scenario, they want to contest at least 40 seats so that they can have a target of 23 seats again in 2024. So it is very difficult for them now. BJP, if it contests 40 seats, then they have to give 8 seats to Ajit Pawar and Eknath Shinde. They are not agreeing. They are also asking for 12 seats each. So if 24 seats are to be contested by Eknath Shinde and this Ajit Pawar group, then BJP is left with less seats. Then they cannot reach their target. So BJP is also looking at. No, sir. I'm not saying that BJP will not have problems with its own alliance partners. But sir, this is not to single out the opposition in any way, but look at the real politique of it. India Alliance came together, a conglomeration of 28 political parties, to defeat the BJP. It is the opposition that decided that they need to work together as a joint and a united force. It was the decision of the learned colleagues together sitting on a table who said that, our political differences aside, we need to come together as a force to defeat the BJP juggernaut. Now, when it comes to the brass tacks of it, which is that are you able to get a seat sharing agreement? Do you have a leadership phase? Congress is expected to have those answers because you still occupy the elder brother position in that alliance. And I think that those answers we're not getting. See, what I'm trying to tell you that there is a bigger problem in BJP in Maharashtra. If you are discussing Maharashtra today, what about Bengal, sir? What about Bengal? I'll come on Bengal also. Please listen to me. They are facing a bigger problem in Maharashtra, and let me tell you on your channel today for the first time I'm saying this, and this is the truth. A section of BJP leaders have suggested their high command that they should go alone in Maharashtra, because they cannot afford to give 24 seats to Ajit Pawar and Eknath Shinde. Let's also talk about Bengal. They are going alone. If they are going alone, that means they are abandoning their own alliance partners with whom they are. Okay, now that you're talking about Maharashtra, let me bring in Mr. Vishwas Pathak also into the discussion. Mr. Pathak, the opposition and their differences are being played up by the BJP. In fact, similar problems exist, within the Bharatiya Janata Party and their alliance partners. Then why blame the opposition for it? Where we are blaming? We are not blaming at all. See, look at what is happening in Maharashtra. Maharashtra is the symbolic, peculiar demonstration of the acts by India Alliance, which is going to happen nationwide also. Here are 4 parties of this India Alliance which are now blaming each other and claiming 24, 25 seats of Lok Sabha. But look at the track record. Congress, which claims to be national party, has won only 1 Lok Sabha seat in 2019, and today they don't have any representation in Lok Sabha. Shiv Sena got around 18 seats, that too because of Mr. Modi's wave. And out of 18, 13 have gone away and joined us through Mr. Eknath Shinde. Then there is Bahujan Vanchit Aghadi, led by Advocate Prakash Ambedkar. He is not part of India Alliance, but he has joined hands with Shiv Sena. Look at the complications. He has not won any seat, but he has declared unilaterally that he is going to contest 48 seats. Okay. And then Sharad Pawar. When Sharad Pawar was at peak in Maharashtra, he could not get more than 4 seats in Lok Sabha. So this is the scenario, and they are claiming 23 and all those seats. Assuming that Mr. Sapraji and his party grants 23 to Shiv Sena, do they have 23 faces? They don't have 23 members also now left. Okay. With Uddhav Thackeray, as far as Congress is concerned, 2 days before, the tallest leader Rahul Gandhi was there in Nagpur. What happened? It was a flop show. And immediately after 2 days, Shiv Sena is claiming 23 seats. Sanjay Nirupam is denying how you can claim that. Let's also bring in Sajid Saab into the discussion. Sajid Saab, do you think that there can be an understanding that can be reached within the alliance partners, keeping in mind that the ambitions on both sides are very, very high? Definitely, there can be
many like understanding between us, because whenever something new happens, there are always teething problems. So those will be solved. And Shiv Sena is clearly 23 seats is nothing for Shiv Sena in all this, because Shiv Sena has been the ruling party. Always the ruling party has always been supported by Shiv Sena. Without Shiv Sena in Maharashtra, especially, I don't think anybody is capable to win, especially Uddhav Balasaheb Thackeray. The people who are really the people on the road also. You ask anybody, you ask an auto guy in Mumbai, you ask a taxi driver in Mumbai, they will always Sajid say, Saab, "We support the my question is, if Mr. Sanjay Raut says that the Congress party has to start from scratch in the state of Maharashtra, you have already written off your alliance partner. You don't think that they bring anything to the table. Then how are you going to negotiate with somebody who you think is not bringing anything to the table? No. It's not writing off. It is about that. It is just an encouraging statement. It is not a statement to put them away. It is. I'll tell you something. It is something to just encourage them to please work better than before. We'll all have to work harder than before. The political scenario, not only in Mumbai or Maharashtra, all over India has really changed. So, Mr. Sapra, you take this advice from your alliance partner as some kind of lecturing or the right kind of encouragement. I want to know from you. Sapra Saab. See, let me first answer the BJP spokesperson in one line what he spoke about the Nagpur rally and all. वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आप खिसियानी बिल्ली हैं, खंबा नोचते रहिए. जनता ने देखा है कि वो रैली कितनी कामयाब हुई है. Now coming to the Shiv Sena spokesperson who was talking now. See, the factual position, whatever Mr. Sanjay Raut has said, I have a lot of respect for him. But also the fact is, in the Legislative Assembly today, Congress party is the biggest party. We are having 44 MLAs, which even Shiv Sena is not having. Here, I don't want to go into all this on a TV channel. This will be discussed in an elaborate way. We have a committee of alliance of 5 senior leaders. They will discuss the same with the Shiv Sena leadership. And then finally, the High Command is also there. But Sapra Saab, don't you think you are very close to the elections already? Please answer on this point also, that you are a seasoned politician, sir. February end, we're expecting the elections to be announced. In the next 2 months, we'll have the dates coming in. If you and your alliance partner get on the same page and decide that this is what the seat sharing agreement is going to look like, you would need your workers to be mobilized on the ground, and you don't need me to tell you that. Do you really think you will have that kind of synergy in such a short span of time? See, of course we'll have that, and let me tell you that media should also not be in a hurry. See, similar problems are there with NDA alliance also, but media should focus on that. And instead of only focusing on the India alliance, see, let me tell you that in another 15 days, we'll sort out this issue, what you're talking about, the alliance partners and alliance seats and constituencies and all. Within 15 days, we'll sort out this issue. Sajid ji, a quick point. 8 rallies throughout the country. The India alliance will be having 8 to 10 rallies across the country in different cities. Okay. Sajid ji, yes, please go ahead. I'm with Mr. Sapra in that. Our alliance definitely, inshallah, is going to be a very thick one and very connected and very. We'll do it very nicely. We do not have any problems. Any party collaborating with any party, it takes time because the ideologies have to match and a lot of other things are to be considered. Let me complete my sentence. Please finish your point, sir. Finish your point. Nobody is interrupting you. Go ahead. What happens is initially it takes some time. Like my friend Mr. Sapra just told that in 15 days we will be solving these problems. These are internal party discussions, which Mr. Sanjay Raut, my Sahib Sanjay Raut just said it, that he's always calling a spade a spade. So when we are telling Congress something, it is not about being an elder brother or a younger brother. It is about being brothers together. We are working as a team. But your brother needs to start from the scratch. But your brother needs to start from the scratch. See, when somebody is giving you some advice, definitely there is something behind it, because right now Shiv Sena knows the range. It knows the veins of Maharashtra. It knows what Maharashtra and Mumbai needs. I think, sir, that is what it's going to boil down to. Who knows it better? Mr. Vishwas Pathak, please go ahead. You had a point to make. See, Sanjay Raut called spade a spade is the right thing. And he has shown mirror to the Congress saying that you have to start from scratch. If we accept his argument, then Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray Shiv Sena will have to start from -5.
If it is from 0, then it is from -5. I think, Mr. And Pathak, Sharad you're Pawar is becoming like overconfident. -10. I'll come back to you. Don't interrupt him, sir. I'll come back to you. It's not Sajid overconfidence. Saab, See, I'll come back to you. Let him make his just now, argument. Please three don't states interrupt have each other in that witnessed manner. elections. Vishwas Pathak. I Mr. think you Vishwas need to Just get Pathak. your facts right. Mr. Vishwas Mr. Pathak right Uddhav now, then I'll go to Sajid Saab. Mr. Can I, Vishwas can I, Pathak. can I, I hearts. also want to talk on We this. can't Recently, have a three debate in states this have manner. witnessed Sajid elections. ji, You have seen the popularity my of request to Modi you, ji. my request. Yes, can we have Mr. Vishwas Pathak first and then I'll See, go to the other two gentlemen. See, entire nation, all the states have made up their mind to have double engine ki sarkar. They have seen when there is double engine ki sarkar, what kind of progress is happening. Okay. Look at Maharashtra. The Okay. moment after, since last 1 year, this BJP-led government, that Shiv Sena-led, Eknath Shinde-led government is in power. Yeah. Again, this economy is on track. In terms of FDI, Maharashtra is again most favored destination. So look at the this decision-making power when there is a double engine ki sarkar. But Mr. Sapra, why don't you also talk about other states? It's not just about Maharashtra. It's about the state of West Bengal, the same problem you will encounter in Punjab as well. Do you really think you can see eye to eye with an Aam Aadmi party, and will they give you any number of seats? Do you think TMC will give you the kind of elbow room you need in those kind of negotiations, and you can come to some kind of common understanding with them? These are very uncanny alliances that have been formed to defeat the BJP. And for you to pass those hurdles and come to a seat-sharing agreement requires a different degree of understanding, which we find missing. And I reiterate, this is not about opposition bashing. This is about having a good opposition, a vibrant opposition in this country, which is fundamental for democracy. Mr. Sapra. See, let me tell you that all the parties have already discussed in the last India meeting that we have to give elbow room to each other. So you don't worry, we'll sort out our issue, whatever it is. As far as the BJP spokesperson was speaking so confidently, can he tell on this channel that how many seats they are going to give it to Eknath Shinde, or how many seats they are going to share with Ajit Pawar? Yes. So they can only talk on Congress party. He cannot talk now about how many seats they will be sharing. And if he's talking about investment in Maharashtra, let him reply that how much investment has come in Maharashtra in last 1.5 years. This is a खोखे सरकार, खोखे दे करके आपने सरकार बनाई है, 64 trillion US dollar. को मालूम है कि It is किस both तरह से the आपने aggregate काले of पैसे दे करके ये सरकार बनाई है। Karnataka. I have last 1 minute on the show. Sajid Saab, closing comments from you. Closing comments from you. Sajid Saab. BJP is so worried, and it is so scared by the name of India itself, that it has done so many things that India name should not be used in other products which Three Make in states India was election there. has shown Everything what now Mr. made Modi in One at a time. One at a time. Now That's what not has what happened is, what has happened is, let me finish. I did not disturb you. Now what has happened is, they are very worried that Shiv Sena has joined hands with the Congress and India. And now the Bala Sahib Thackeray is the people's leader. He is the mass leader. Rahul Gandhi ji also proved himself. Okay. They were so threatened by Rahul Gandhi ji also. They are worried about What happened Well, in sir, three the states? opposition So, has now they are has my so best worried. wishes. Let us see I how really they hope work that the together. opposition is Keep the able to elections stitch tomorrow. together these alliances that can give a real challenge to the BJP juggernaut. After all, we need a formidable opposition in this country for our democracy to be thriving. With that, it's a wrap on this edition of Brass Tacks. Thank you very much for watching. Hello, Moto. Presented by
Does Marlon want one? You can take as many as you'd like. It's time for the Republican Party to unite, to come together and focus our energy and resources on beating crooked. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. 50 be advised, Capitol Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Well, thank you very much. We love Trump! We love Trump! We love Trump! We love Trump! I need you all to commit right here, right now, to be a part of this movement. Take back Arizona. Support we love. Back up Patriots. Count the votes! Count the votes! Count the votes! Working as an engineer throughout my life, I lived by the motto that numbers don't lie. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. It's no wonder Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They're willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win. They will do anything to win. They'll do whatever they have, whatever they can.